Good evening. This is All India Radio. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरव धवनलाल। Thank you, Vishal, and welcome to the studio, Dr. Yamini. Thank you. We begin with the headlines. Domestic stocks logged marginal gains. Sensex closes above the 59,000 mark. Nifty settles above the 17,600 level. Rupee appreciates to 79 rupees and 82 paise against the US dollar. And Brent crude rises above $101 per barrel. घरेलू शेयर बाजारों में मामूली तेजी दर्ज। सेंसेक्स 59,000 के निशान से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 17,600 के स्तर से ऊपर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होकर 79 रुपए 82 पैसे के स्तर पर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $101 प्रति बैरल के पार। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले शेयर बाजार से कर लेते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली तेजी रही। वैश्विक शेयर बाजारों में नरमी के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 59,000 के निशान से ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,600 का स्तर पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 54 अंक बढ़कर 59,085 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27 अंक की वृद्धि से 17,605 दर्ज हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.8% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.73% की बढ़त में रहे। The Sensex and the Nifty today logged marginal gains. Both stock indices gained even as the global share markets were negative. The Sensex closed above the 59,000 mark while the Nifty finished above the 17,600 level. The Sensex rose 54 points to finish at 59,085. The Nifty also added 27 points to end at 17,605. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.8% and the small-cap index added 0.73%. In the Sensex pack, 16 companies posted gains while 14 logged losses. IndusInd Bank was the top gainer as it climbed 2.9%, followed by NTPC, which gained 1.3%. Larsen & Toubro and ICICI Bank both surged 0.9% each. On the other hand, Tata Steel and TCS both lost 0.9% each. Titan plunged 0.8%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors gained, while 5 logged losses. Realty sector gained 1.7%, telecom index rose 0.9%, and consumer goods ended 0.8% up each. On the other side, IT and tech both indices tumbled 0.2% each, while consumer durables and oil and gas sectors slipped 0.1% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,053 companies gained while 1,349 fell. Shares of 144 companies remained unchanged. Dr. Yamini, the market as we see it remained more or less flat during the day, but just towards the end of trading, marginally up. What does this tell us? Well, overall, there is a volatility in the market, as we can see. The positive indicators have lifted the mood of the market, but still because of the fears of inflation as well as because of recession in many economies, including US, it continues to be a very volatile situation. Further, there has been no resolution to the Ukraine-Russian crisis, and the geopolitical situation continues to remain in a more or less uncertain direction because there has been aggression by the China towards Taiwan after Nancy Pelosi's visit. Right. So there is an overall fear in the market and overall concerns in the market with respect to recessions
and which is pulling down the market. But there are positive sentiments in the market, especially in India, because when we talk about Q1 growth of financial year 23, we do see that there is an increased GDP growth rate of about 15%, and we are also looking at the overall growth rates at about 7.5% or 7.2%. Thereby, we are also seeing that all the high frequency indicators, whether it is passenger vehicle sales or it is any other particular indicator, they're all showing a positive direction. The inflation fears continue to challenge India also because of the crude oil prices, which are at $101 per barrel today. But then the inflation from 7.7% has come down to 6.7%, which is a positive indicator. And also the monetary policy, which has affected the interest rate hikes, has caused FIIs to invest in the economy back and has seen a renewed interest of the FIIs who have converted themselves into net buyers instead of being sellers. These are all the factors which are affecting the overall volatility of the market. जी डॉक्टर यामिनी, जो वैश्विक शेयर बाजारों की बात करें तो वहां नरमी देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी को अगर हम देखें तो पिछले 2 कारोबारी सत्रों में इतनी तेजी नहीं, लेकिन हल्की तेजी तो दर्ज हुई ही है। ऐसे में एफआईआईज का रोल आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? जो स्टडी बाइंग जो एफआईआईज ने शुरू करी है, और खासतौर पे इस महीने के अगर हम आंकड़ों को उठा करके देखें तो $5 बिलियन से ज्यादा एफआईआईज ने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में लगाया है। ये आप इसको आप किस तरीके से देखती हैं? जी देखिए, जो एफआईआईज का रुझान रहा है वो बदला है नेट सेलर से लेकर के नेट बायर पे, और देखा गया है ये रुझान यूएस की तरफ ज्यादा गया था जब फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए थे। जो लास्ट रेस था वो 75 बेसिस पॉइंट का था, और माना जा रहा है कि अब जो मीटिंग आएगी उसमें जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा। उसकी एक अनसर्टेनिटी रही है मार्केट्स में, पर क्योंकि आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए थे, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो कम हो गया था, और जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं भारत के प्रति, चाहे वो रिफॉर्म्स हो भारत के या उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें या फिस्कल प्रूडेंस की बात करें और एक फिस्कल कंसोलिडेशन की भी बात करें, ये सभी इन लाइन है प्रोग्रेसिव वे में। आरबीआई ने ये भी टारगेट निकाला है कि वो 4% का टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगी अगले 2 सालों में इन्फ्लेशन का। कोशिश यही की जा रही है कि ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन को भी टेम किया जाए। तो जो ओवरऑल स्ट्रेंथ्स हैं इकोनॉमी के, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रहता है, और वो खास तौर पे एक ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से और जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स आए हैं जिसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस हाइक हुई हैं उसकी वजह से भी रह रहा है, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस रही हैं। तो जैसे जैसे ये थोड़ी कम होती हैं, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 से नीचे जाता है और जो सप्लाई चेन्स हैं वो वापस अपनी रिकवरी पोजीशंस पे आ जाती हैं, भारत के लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी। जी, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जिस तरीके से चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, और ऐसे माहौल में भी भारत का प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावनाएं बताई जा रही हैं इस बारे में, और आपको लगता है कि एफआईआईज का जो इन्फ्लो है वो भारत में आगे भी बना रहेगा और इसमें और तेजी आएगी? जी देखिए, एफआईआई ज्यादातर तभी निवेश करते हैं जब उनको अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, और अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में या जो वर्ल्ड में भी मार्केट्स में देखें तो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसका ग्रोथ रेट सिर्फ आरबीआई ही 7.2% नहीं कह रही, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं वो भी 7 से ऊपर आंक रही हैं। अगर आप आईएमएफ की बात करें तो वो 7.5% आंक रही है। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है भारत की इकोनॉमी के, कि एक जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत बड़ा है, और वो जीडीपी का काफी कंट्रीब्यूशन रहता है उसके अंदर। तो क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी वापस रिकवर कर गई है, उससे जो जीडीपी ग्रोथ है उस पे काफी असर पड़ता है। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखें, अगर इस क्वार्टर के भी देखें जो FY23 की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो पहले क्वार्टर है और दूसरे क्वार्टर है उसमें ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि एक बेस इफेक्ट है, पर ओवरऑल ग्रोथ भी देखें क्वार्टर वाइज वो कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जो IIP इंडेक्स है, चाहे आप उसकी बात करें या PMI इंडेक्स है जो 55% है, वो सब एक्सपेंशन की तरफ नजर दिखाती हैं. ओवरऑल जो स्कीम्स हैं लाइक PLI की जैसे स्कीम है या डिजिटलाइजेशन की स्कीम है या डिसइन्वेस्टमेंट है, ये सभी एक प्रॉपर चैनल्स दिखाते हैं जिसके थ्रू एक रिफॉर्म प्रोसेस और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे जा रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा फोकस रहा है. काफी इन्वेस्टमेंट पहले भी की जा चुकी है और अभी भी की जा रही है. तो इन सभी का असर हम देखेंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर. Dr. Yamini, you earlier spoke of we are looking at a good growth in GDP over the next few years. We also know that FIIs want to come in and they see expansion in sectors, so they invest there. So what are some sectors which will be attractive to FIIs? And of course, what are those sectors where we're looking at they are going to be the major contributors to the growth in our GDP? Well, FIIs will look at many sectors, so it is not one specific sector that one can outline. But yes, there are green sectors which do attract investments right now, which may include financial sectors, which may include fintechs as well as traditional banks. Also, there would be sectors like the IT sector, which will look in for more investment, as this is known an age of technology, like the Prime Minister said on 15th of August, that it will be given to technology. So AI, blockchains, they will all be something that people would be looking at. Further, if one looks at other sectors, FMCG, consumable durables, as well as automobiles, will also be certain sectors where FIIs would like to invest. But again, what is important or key for FIIs would be the returns that they're looking at. And they're looking for much higher returns than any other economies that can offer. And that is why they would stay in. So that would keep the key over there. Right. And in terms of GDP, what do you think are going to be the major contributors to this expansion? The same sectors or something more? Well, services sector has been one of the largest contributors, and then comes the industry, and then comes the agriculture sector. So services sector, especially because of IT and healthcare, would continue to grow at a much larger pace. The growth has also been fostered by a large number of reforms, which we have seen by the measures of financial inclusion or the introduction of payment banks or the entire technology sets which have been offered through fintechs, which have changed the entire financial landscape. Also, when we look at sectors which have been contributing, another sector which has been contributing is the IT sector, pharma, IT, as well as banking. So these are three sectors which will be mostly contributing towards a much higher paced growth that would be there. Also, there is a constant focus on exports. Like there has been a scheme which is one district, one product, or there has been a vocal for local scheme where there is a strong impetus given to the MSMEs for development. So whether it is in the manufacturing sector or services sector or any other sector, the MSMEs are likely to give growth to the economy as and when they get more formalized, because the credit is being made available to them. Also, it is being ensured that they get into the digitalization process and the formal economic process where small enterprises were unable to reach out. Also, with the simplification of the taxation system to going into a GST framework, many of the companies will grow in terms of their network from one place to other, because earlier state-wise doing business was difficult because it would require a lot of legal work and paperwork, but now it becomes easier with GST. So we will see many companies come forward. Besides that, the PIL scheme also would favor the manufacturing sector, which is an aim. Another sector that the government has been focusing on is looking at the blue economy, which is looking at the coastal region. So the marine life would also, or the marine side, will also be one of the contributing factors to the GDP. The necessary push is being given by creating the infrastructure of ports, airports, or the others, and creating every city or every state within themselves in being sufficiently having the potential to reach a good GDP growth.
Right. So when we are talking of all these, whether it's the blue economy coming up and whether we are looking at reaching the MSMEs, even in the small, the unorganized sector, we're also talking of, I think, somewhere a startup culture. And I think a big shout out for entrepreneurship, for startup culture has been given. Banks, of course, are giving credit. Do you think venture capitalists, private capital is going to play a role because, they are less risk averse, right? They take greater risk. Startups have, very different and unusual ideas. So do you think that can also play a major role? Well, I do see that there has been a creation of an ecosystem which was somewhere or the other missing for the startups. There was a continuous encouragement for the startups, but there has been a strong impetus that has been given by the government, by focusing on a lot of factors which would help startups, whether it is providing loans, whether it is providing technical support, or whether it is changing the entire attitude towards the idea of bringing about a startup, because it not only creates a venture but can create employment in the region where that particular sector is, initiated. So automatically the startups are also likely to lead from front in many avenues where whether it's technology, whether it's IT, whether it's pharma, or it's any place. So their continuation and their development will play a key role in the growth of the economy. Right. जी, और अब घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 79 रुपए 82 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्देशीय कारोबार में 0.12% बढ़कर 108.85 पर कारोबार कर रहा था। रुख करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो आज यहां गिरावट का रुख रहा। दुनिया भर से मिल रहे कमजोर आर्थिक आंकड़ों से निवेशकों की धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ा है। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.9% और हांगकांग का हैंगसेंग 1.2% लुढ़क गए। जापान का निकेई सूचकांक 0.5% फिसल गया और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.4% के नुकसान के साथ बंद हुआ। हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% लाभ में रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान रुख मिला जुला था। लंदन का FTSE 100 0.3% फिसला, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.2% और फ्रांस का कैक 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। A quick look at the U.S. market. U.S. stocks ended marginally lower yesterday. Wall Street fell as investors focused on data showing a slowing economy ahead of a U.S. Federal Reserve gathering later this week in Jackson Hole in the Wyoming state of USA. The Dow Jones Industrial Average Index lost 0.5%. The S&P 500 slipped 0.2%, while the Nasdaq Composite ended flat. डॉक्टर यामिनी, एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 1.9% के नुकसान में रहा है और हांगकांग का हैंगसेंग 1.2% लुढ़का है। चीन की अर्थव्यवस्था को अगर हम बात करें तो वहां पर स्लो डाउन की बात की जा रही है। क्या वहां पर आर्थिक आंकड़े जो वहां से आ रहे हैं इस समय चीन से, क्या वो बहुत उत्साहित करने वाले नहीं है? और इन सबका असर जो नेबरिंग जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर क्या आप देखते हैं? ये देखिए, जब से कोविड हुआ है तब से हमने देखा है कि एक खासा संसार भर में माना जा रहा है कि क्योंकि ये चीन से उत्पन्न हुआ था और चीन ने इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं दी थी और राइट टाइम पे नहीं बताया था, तो चीन कहीं आइसोलेट हो गया इकोनॉमिकली कोविड के दौरान। ये भी देखा गया क्योंकि इकोनॉमीज कोविड के दौरान लॉकडाउन्स में रहीं और काफी हद तक स्टैंड स्टिल में रहीं और चाइना का ज्यादातर कारोबार या उसकी जो जीडीपी ग्रोथ मानी जा रही थी वो आ रही थी एक्सपोर्ट्स के माध्यम से। और जब संसार भर में लॉकडाउन्स लगे या कोविड से जूझने के लिए और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स थे जो चीन से आ रहे थे वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट किए गए और उसका सीधा असर चाइना पे पड़ा। और भी देखा गया जो अब उनके यहाँ कोविड हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि वो जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं,
तो वहां पे काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो उनकी सप्लाई चेन्स हैं वो रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में है वो सप्लाईज जो है कम हो गई हैं और जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, जो संसार भर में इन्फ्लेशन के फियर्स और ज्यादा प्रेशर में डाल रही हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि एक खासा हद तक स्लो डाउन रहेगा। जैसे कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स में देखा जा रहा है, फेडरल रिजर्व बैंक ने जैसे अपने इंटरेस्ट रेट हाइक किए, वैसे ही ब्रिटिश बैंक ने, इंग्लैंड के बैंक ने रेस किए, ऐसे ही बाकी सेंट्रल बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं ताकि वो इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पा सके, जिसकी वजह से ओवरऑल स्लो डाउन और रिसेशन की स्थिति ज्यादा पैदा होती है और चाइना के लिए एक्सपोर्ट करना और मुश्किल हो जाता है। बाकी संसार भर के मुकाबले जहां पे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, पर चाइना मान रहा है कि वो एक अकोमोडेटिव स्टैंस अभी भी रखेगा ताकि वो जो अपनी करेंसी है उसको डेप्रिशिएटेड रख सके और एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बना सके, क्योंकि उसने काफी हद तक जो ग्रोथ अपनी एज एन इमर्जिंग नेशन एस्टैब्लिश की है वो एक्सपोर्ट्स के माध्यम में की है और अपने आप को एक मेजर ग्लोबल सप्लाई चेन प्रोवाइडर की तरह की है, जिसकी वजह से जो चाइना है आज एक काफी लीडिंग पोजीशन पे एस्टैब्लिश हो चुका है। पर इसके अंदर ये देखना जरूरी है कि वर्ल्ड इकोनॉमीज कैसे ग्रो करेंगी और वो चाइना के ऊपर कैसे असर डालेंगी। और एक और चीज देखी गई कि जो चाइना है उसने हाल ही में कुछ अपने जो टेक के एंटरप्रेन्योर्स थे जो काफी अच्छा कर रहे थे उनके ऊपर भी एक्शंस लिए, जिनका असर एंटरप्रेन्योरियल एवेन्यूज के ऊपर या एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के ऊपर खासा नेगेटिव पड़ा है, जिसका भी असर नजर आया है। चाइना का जो एग्रेशन रहा है ताइवान की तरफ, उसको भी बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया गया और माना जा रहा है वो भी चाइना के ऊपर सैंक्शंस बाद में कभी ला सकता है। तो इन सभी के मद्देनजर जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं है इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ, और इसीलिए माना जाता है कि अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड में देखें तो इंडिया एक काफी अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है। जो इकोनॉमीज को चाइना सपोर्ट कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वो लाया था और कोशिश कर रहा था कि एशिया में अपनी डोमिनेंस बढ़ाए, चाहे वो श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, उन सभी देशों में आज की स्थिति में एक इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है। और उस इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए काफी हद तक लोग समझते हैं कि जो चाइना का रुझान रहा है वो एक डोमिनेंस का रहा है और एक्सपेंशनरी फोर्सेस का रहा है, और इसीलिए अब वो जो मदद की गुहार लगा रहे हैं वो भारत से लगा रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान भी हो। तो वो जो देखते हैं एज अ फ्रेंड वो भारत को देखते हैं और चाइना की तरफ नहीं ज्यादा झुकाव रखते। Dr. Yami, coming back now, we're talking about the global issues, and when we talk of I think one of the basic securities that we need is food security. India has always been a grain surplus nation, but also we are looking at that somewhere with Ukraine being the situation that it currently is, we are likely to see that there is an opportunity for India to actually take over the international grain market to a greater extent, one, and secondly, the most affected in any food crisis or shortage, because climate change is also affecting output, which is going to be very shortly visible. The most affected will be the nations, the poorer nations, the marginal nations. So what do you think India's role can be in terms of this? India has always followed a very positive role in terms of the world markets. It has always promoted peace and support to any economies that might have needed it in the time of crisis. Whether we had something or not in surplus, we have still been provisioning help to many of our neighbors as well as to the world market. Right. If you remember clearly, when it was COVID time and there was a medicine that was needed or a chemical that was needed, that was provided to America by us, for which we were appreciated. Also, the vaccination was provided to many countries. Similarly, when the sanctions have been put on Russia, the European region will face a food crisis because of that. And India being a very neutral country in terms of its stances as well as in terms of its overall foreign policy, without taking sides, it has always extended its support in maintaining the stability in the world markets.
So we would also at that time provide for that. And we do know that our production have been one of the highest, and the season, because of the rainfall which has been normal, is likely to produce good amount of crops for us in the country. Right. So somewhere a balanced stance, you're saying that because we have our own internal needs, we need to remain surplus, we need to have a buffer, and also then look at the world situation, I think. We would always provide for our domestic needs first and keep our national interests as priority. Absolutely. But at the same time, it's a very constructive role that India has played in all crises across the world. Even with enemies, there have been friends that have, as a friend, we have supported them in their difficult times. Right. We'll now take a look at the oil prices. Global crude oil prices today rose more than 1%. Brent climbed to trade over $100 per barrel level in intraday trade. Brent crude was trading at $101.10 per barrel, while WTI crude prices were at $94.50 per barrel. Dr. Yamini, oil has gone above 100 again. What's happening? Well, overall, there is a demand in the market, and the supplies have not increased. So there is a continuous pressure on OPEC to increase the supplies, primarily because the crude oil prices being higher than $100 is causing an inflation pressure in most of the economies. 40-year high in US, 40-year high in UK. Again in Europe as well as in India, we've touched double digits in WPI. We have touched 7%, and we're much higher than our targeted level. So crude oil is playing a very crucial role in having the pressure of inflation, forcing many central banks to take a tightening monetary policy stance, which is again causing a recession in the economy. So there is a continuous pressure on OPEC to actually increase the supplies, but they're waiting for the demand to completely recover so that they can make good the losses that they've had during the COVID times, as well as the slowdown of the demand that they have seen. So there would be a balance that needs to be there. What needs to be kept in mind is that, yes, there have been sanctions in some economies, which has also caused the crude oil crisis, which is there. So one can look at options of purchasing oil from the countries on which may supply them at a lower price. Right. जी, और अब बात करते हैं गोल्ड की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना आज 60 रुपए सस्ता होकर 51,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 240 रुपए टूटकर 54,970 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,758.60 प्रति औंस पर था। चांदी भी मंदी के साथ $19 प्रति औंस पर थी। डॉक्टर यामिनी, सोना अगर हम देखें तो 50,000, 51,000, 52,000 के एक सीमित दायरे में कारोबार करता दिख रहा है। क्या जिस तरीके से अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्या इसमें कुछ तेजी की उम्मीद करती हैं आप? जी बिल्कुल, गोल्ड एक्सपेंसिव हो गया है क्योंकि डॉलर जो है इंडेक्स वो बढ़ गया है और डॉलर की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। तो गोल्ड थोड़ा महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाए, पर क्योंकि फेस्टिव टाइम्स रहते हैं उसके दौरान हम देखेंगे कि गोल्ड की कंजम्पशन काफी रहेगी। और चांदी की बहुत संक्षेप में बात करेंगे कि चांदी 54,970 के स्तर पर है। एक समय था अब से कुछ साल 2 महीनों पहले की बहुत अच्छे स्तर पर थी चांदी। ये क्या इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो रही है चांदी की? जी ऐसा नहीं है, पर गोल्ड की तरफ बढ़ जाता है रुझान तो सिल्वर थोड़ा सा कम हो जाता है। डॉक्टर यामिनी, हमसे बात करने के लिए और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Dr. Yamini, for coming on to our show. And now, before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks logged marginal gains. Sensex closes above the 59,000 mark. Nifty settles above 17,600 level. Rupee appreciates to 79 rupees and 82 paise against the US dollar. And Brent crude rises above $101 per barrel. And that's it in this edition of our program. Namaskar. Namaskar.